and D are under. U and D are under. Okay, so good evening, everyone. So let's get started with our day 4. So quickly, let's have a recap of yesterday's session. So guys, quickly tell me what are loop control statements we have studied yesterday. Quickly type in the chat box. I mean, that's wrong. I have asked you to tell me loop control statements. Loop control statement, guys, not loops. Not yet, Anjali. No, Gurleen. Okay, Mansi gave the right answer. Okay, Preeti gave the right answer. Now, I mean, you are on the right track. Yes, Aarti. Okay, Amanpreet. Okay, Harshita. Okay. So, guys, please take care that the loop control statements are break, pass, and continue. Okay. Okay, now tell me what all conditional statements that we read yesterday. Okay, Tunisha, just confirm if my voice is breaking in between. No, it's fine. Okay, okay. Okay, guys, the answers are coming are correct. So we have read if else, if elif else. We have also read about the nested if. Other one is shortened if, and the last one was shortened if else. Okay, so that's all about the conditional statements. Okay. Okay, just a second. Okay, now is it fine? Okay, Tunisha, just check. I'm just joining in from another device. Okay. Okay. Okay, so now is my voice fine now? Yeah, it's fine. Okay. Okay. So the other question is, what are loops we studied yesterday? I'm talking about the loops. Okay, Aarti, while loop, for loop. Okay, while for. Okay. Okay, most of you are giving it correctly. Okay, so we read yesterday about the loops that were while and for loop. Okay, Kanishka, else is not a loop. While and for are the loops. Okay, else come under conditional statements. Fine. Okay, so yesterday I gave you an assignment to do. So let me know in the chat box who has completed that. Right, why in the chat box? The assignment that I gave you yesterday. Okay, Kashish has completed. Okay, Jia. Okay. Okay, no issues, Mehak. That's fine. Okay, Amin, can you share a screen and show the result? Okay, I'm just stop sharing. Okay, you can share a screen now. Okay, Aarti, no problem.
Okay, I mean, can you unmute yourself? Yes. Okay. So you did. If the grade is less than 0, then we have to print impossible, correct? Okay. If the grade is from 0 to 59, then it should print 1. If it should be from 60 to 69, then it should print 2. Okay. Okay, I mean, just instead of 100, just write 75. Okay. Okay, it's fine. Okay, anyone else who wants to share her screen? Okay, Deepa, no problem. Jia, can you share your screen? Okay, you can. Okay, Vanshika has already typed in the chat box. Okay, Vanshika, the code is correct. Just make sure one thing that you have not used the equal to sign. Okay. अगर उसके मार्क्स 60 हुए, then it will not show anywhere कि उसका grade क्या है. Same goes for 59, 70, 0. Okay, make sure that you should use greater than equal to or less than equal to. Fine. Jia, are you sharing the screen? Okay, okay. Okay, Tanisha, have you completed the code? Okay, Jia. Tanisha, are you there? Yeah, I'm there. Okay, have you completed the code, yesterday's code? No. Okay. Okay, so let me share my screen. Okay, Mehak and who else was not able to complete the question? I guess Aarti was there and Deep also, right? Okay. Mehak, can you? Hello. Yeah, hi Mehak. Okay, Mehak, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ ना, you have to tell me the same thing. Okay. Okay, Di. Okay. So first, I'm going to assign a variable that is points. So let's suppose we are assigning a value of 32. Okay. Di, So your Mehak, voice is what should breaking. be the first condition? Okay. What should be the first condition that I should write here? Yeah, Di, just a minute. Just first Di, we initialize something, a variable to a value. Hello. Okay. Yes, So Mehak, you just are let's audible. suppose A is equals to 100 or 99. You can choose.
Okay, that's fine. I've taken, okay, चलो 100 लिख देता. Actually, I'm not able to see what you write. Actually, due to the screen is freeze. Okay. So, Shrishti and Tanisha, please confirm if my screen is freezed. Yes, I think the same. It's not visible to me. Okay. Is it? Okay. So Srishti, I'm just joining from another 2 minutes. Okay, in another 2 minutes. Sure. Okay, guys, just tell me if my voice is still breaking or is it fine now? It's fine. Okay. Okay, so let me just do this question. Okay, so guys, I have assigned a variable a for my points, or instead of a, I'm just using points. Okay, and let's assign it a value of 100 for now. Now, after this, I have to write this for the first condition, that is, if my points is less than 0, then I should print impossible. So I'm using if condition. If my points is less than 0, then I should print impossible. Now I'm going to use the elif. In the elif, what I have to do, I have to assign 0 to 59. Agar mere points hai, then my grade should be 1. Okay. So I'm going to write if my points is greater than equal to 0 and points is less than equal. Srishti, please confirm. Yes, it's breaking in between. Okay, Srishti, can you please share your screen? Yes, Isha, I'm going to do that only.
Is my screen visible, Anushka? Yes, it's yes, fine. it is visible. Srishti, can you please explain the code and make them understand? Yes, just give me a minute. So here in this question, what we are doing is we are using multiple conditions. So we yesterday studied about if, elif, and else. So when one condition is false, we go to elif, and if it is false, then we go to else. So it is a multiple condition question here. So our first condition is if marks is less than 0, then we will print impossible. Next condition is if marks is in the range of 0 to 59, then we will print 1. Okay, we are initializing points here. Points less than 59, less than equal to 59. Yes, right, points instead of marks. Okay, I guess there is issue in Tunisha's network also. Okay, can anyone here can explain the code and share her screen? Yeah. Okay, Vanshita, I'm making you the Vanshika, you can unmute yourself. Vanshita, I'm sorry. Am I audible? Yes, you're audible. Uh, Tunisha, can you stop sharing your screen? Vanshita, you can share screen. Am I audible? Yes, you're audible. Okay. One second, मम्मा ये गेट बंद करो. I'm so sorry. Is my screen visible? Yes, it's visible. Okay. So, हम लोग first we need to assign a variable and we'll give points. As per the question, हम लोग को एक variable assign करना है points को, फिर
उस जो पॉइंट्स आएंगे उसके बेसिस पे हम लोग को ग्रेड्स अलॉट करनी है. Now, for example, let's say we have got 80 points. We'll assign, we'll use if statement and we'll see, check if points are less than 0, then we'll print impossible. If points are less than 0, then we'll print impossible. Next, we use else statement. We'll check that if points are greater than and equals to 0 or less than 60, it will print less than 60, which means till 59, it will print grade 1. Moving on, we'll see if points are less than or equals to 60 or it's is greater than and equals to 60 or is smaller than, ये क्या हो गया? Equals to and smaller than 70, then it will print grade 2. And same way we'll move on that if points are greater than and equals to 70 and less than 80, which is equals to 79, the grade will be printed as 3. Similarly, if points are greater than and equals to 80 and smaller than 90, grade is 4. And if points are greater than equals to 90 and smaller than 100, the grade printed will be 5. And above 100, if any marks is above 100, then it will print impossible. Now let's check this. If we have -1 with our point, so let's see, it's printing impossible because when we check it through these statements, we saw that -1 is less than 0. So it will print the statement impossible. Now let's check 35. Now we'll see that is 35 smaller than 0? No. Then it will move to next statement. Is 35 greater than 0 or greater than or equals to 0? Okay, it's not equals to 0, but it is greater than 0. So we'll now the condition will be checked is 35 smaller than 60? Yes, 35 is smaller than 60. So the grade is 1. It has printed, the output will be the grade is 1. Moving on, if we see 60, let's say. The grade is 2. Here we saw that if points are greater than and equals to 60, the point is 60, so it is equals to 60, then it will print the grade 2. Similarly, these all points can be checked this way. Now let's look at points which are greater than 100. Let's say 101. Again, the output will be impossible because these all conditions are not satisfied. So the else conditions will be satisfied, that from 0 to 100, if there are no points, the output will be impossible as per the else statement. Thank you, Vanshita. You explained it very well. Guys, those who were not able to do this, I guess you can. Tell me if my voice is now fine or not. Your voice is breaking. Also, Vanshita, please write less than equal to 100. Equal to will be also there. Okay, I did it. Thank you. Thank you, Vanshita, for sharing your screen explaining this question. Shrishti, can you please share your screen if possible? If not, just let me know, okay?
Shrishti, are you there? Yes, just wait a minute. There is some internet issue at my end. Okay, No, just no, make it's Isha loading. as the co-host, Isha Mittal. She'll share her screen. Okay. Is my screen visible? Yes, Isha, it is visible. Anushka? Hello? Yes, Isha, it is visible. Yes, it is visible. Okay, guys, so just let me know, Shrishti, once if my voice is it's still breaking or not. It's fine right now. Okay, fine. Okay, guys, so first of all, we are getting a lots of confusion related to the Google Colab files. Where are they saving? So, guys, you have to open your Google Drive. Okay. You have to open your Google Drive. Isha, can you please switch to your drive? अनुष्का एक मिनट में नई फाइल क्रिएट कर रही हूँ और फिर दिखाती हूँ कि कहाँ पर हो रहा है वो सेव. Okay, okay, fine. Deepa, if you are using a phone that is Pydroid 3, so in that you must have made the folder, right? अगर folder नहीं बनाया, so just check in your file explorer. File manager होता है ना phone पे, वहां पे दिख जाएगा. Okay, guys, so those who are working on Google Colab, आप लोग अपने फोन पर भी चेक कर सकते हो. Those who have Google Drive installed in their phone, अगर नहीं है, so you can use your system. Okay, so Google Drive पर जाओ. In the search bar, you have to write Colab notebook. Isha, can you please write Colab once? Okay, you can see the folder is there, Colab notebooks. If you are not able to find it, you can search in the search bar also. Okay, so Isha double click करना एक बार. When you double click that, you can see जो फाइल आपने बना रखी है वो यहाँ पे आ जाएगी. Similarly, आपके पास day 1 की फाइल भी होगी, उसमें day 2 की भी होगी. अगर आपने फाइल नेम नहीं किया होगा तो untitled 0 या untitled 1 करके आ रही होगी, या फिर कोई और नेम से, जिस नेम से आपने सेव की होगी. फाइन. Also, tomorrow you are going to get an assignment. So those who are using Google Colab, उन्हें क्या करना है, शेयर पर जाना है. ईशा, can you please tell where is the share option? Okay, शेयर पर जाके click to view करना है सिर्फ. Only for the view वाला लिंक चाहिए हमें. So you have to click on this link, change to anyone, and side में देखो view लिख के आ रहा है. You have to copy this link जो ऊपर लिख के आ रहा है and paste in the form जहां पे हमने आपको field दे रखी होगी, and then you have to submit. Fine. Those who are using Google Colab,
if you have understood what you have to do, just write Y in the chat box. Okay, Khushi and Gurleen, I'm repeating. Okay, Mitali. Okay, guys, so I was saying हमारी गूगल कोलैब की जो नोटबुक्स होती हैं वो हमारी ड्राइव पर सेव होती है. ड्राइव का लिंक देखो टॉप लेफ्ट में है, बिल्कुल कॉर्नर में, दैट इज ड्राइव लिंक. ओके, सो वो ड्राइव आपको ओपन करनी है. ईदर यू कैन ओपन इट योर फोन. गूगल ड्राइव सबके फोन पे एक ऐप होता है. सिमिलरली वी हैव गूगल ड्राइव इन द वेबसाइट ऑल्सो. सो हमें वहां पे ओपन करना है. यू हैव टू गो टू कोलैब नोटबुक्स और यू कैन सर्च कोलैब नोटबुक्स. उस फोल्डर पर जाके यू कैन फाइंड ऑल योर फाइल्स. जो भी अभी तक बनाई है आपने वो सारी फाइल्स यहाँ पर विजिबल होंगी आपको. ओके, सो कल के असाइनमेंट में यू हैव टू शेयर द फाइल. जो भी आप लोग बनाओगे, जिस भी नेम से बनाओगे. ओके, सो जो फाइल आपको शेयर करनी है वो सिर्फ व्यू के लिए होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी एन एडिट और समथिंग. इट शुड बी ओनली फॉर द व्यू मोड ओनली. ओके, व्यू मोड के लिए क्या करना है, जैसे हम लोग इस वाली फाइल के ऊपर गए, क्लिक किया, वहां पे शेयर का एक ऑप्शन आता है. सी राइट क्लिक करके शेयर का ऑप्शन आया. उसके बाद एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा. वहां पे नीचे देखो लिख के आ रहा है गेट लिंक. ठीक है, अभी ये एनीवन पे है. अगर मैं इसको चेंज पे करूंगी तो इस पे यू कैन डिसाइड कि एनीवन विद द लिंक करना है, रेस्ट्रिक्टेड करना है. सो डू दिस एंड एनीवन विद द लिंक एंड व्यू पार्ट में करना सिर्फ, नॉट द एडिटर वन. एंड कॉपी दिस लिंक जो भी ग्रीन कलर में आ रहा है बॉक्स में एंड क्लिक ऑन डन. ओके, एंड ये पेस्ट कर देना कल गूगल फॉर्म में. फाइन. Those who are using Pydroid 3 on their phones, so guys, you have to upload the screenshot of your code and the screenshot of your output. Okay, I hope it is fine now. Okay, so now Isha, just stop sharing. I'll just try to share my screen once. Okay, quickly tell me in the chat box if my screen is visible to all. Okay, guys, so today we are going to learn about input, how to take the input from the user. अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे थे, बट नाउ आप यूजर से खुद की वैल्यू लोगे. फाइन. सो फर्स्ट इज how to take the input from the user, a single input. Okay, so input के लिए देखो आपको ये लिखना होता है, this syntax. You have to write input keyword and inside input keyword you have to write any statement. Like अगर आपको user को बोलना है enter a number, तो you will write enter a number is string inside the keyword. Similarly अगर आपको enter a string करवानी है, string मतलब those who are inside the double inverted commas. Okay, so that is enter a string. Okay, now the difference, how to check if we are going to input a number or a string. So you can either input a number or string using input, but जो भी उसमें input होगा ना सिर्फ input का यूज करके, that will be string only. अगर आपको सिर्फ int input करवाना है, int means integer number, so you have to use this syntax. First you have to use int, inside int parenthesis you have to write input, and inside input parenthesis you have to write the string. Like you have to say to the user enter a number. Similarly, if you want to get float number from the user, so you will write float input enter a number. Okay, guys, quickly write Y in the chat box if you understood the syntax part, how to write it. After that, we'll do the practical part. Okay. Okay. So let's come to the Google Colab.
सो गाइस एक बार मेरी स्क्रीन पे पहले देख लेना, उसके बाद try it on your own. Okay, so I am just going to take an input of my name. So let the variable be name equals to, I am going to use the keyword input. After that I am going to put the parenthesis, and inside the parenthesis मुझे यूजर को क्या बोलना है, enter your name. ओके, आफ्टर दैट जैसे मुझे नेम मिल जाए मैं नेम प्रिंट करवा दूंगी. सो लेट्स चेक द आउटपुट. सो मैंने क्या बोला था, एंटर योर नेम, ये यूजर को दिखेगा. नाउ इट इज आस्किंग फॉर माय नेम, सो आई एम गोइंग टू राइट अनुष्का. आफ्टर दैट व्हेन आई क्लिक ऑन द एंटर बटन, it will print my name. See, I have used the state and print name. Similarly, it is going to print my name. Okay, I hope you understand this one. Okay, so quickly write in the chat box. Let's suppose the variable is a, and I want a floating number as the input. So what should I write? Write the syntax after the equals to. Yes, at the right after float, what should I write? Float is not the complete. Yes, GR, write the correct answer. Okay, Twinkle, correct. Twinkle, make sure you use parentheses after input also. Okay, Shifa. Okay, Amin, nice. Okay, Oshin. Okay, Preeti. Okay, Kashish. Okay, Khushi. Okay, Barkha, make sure input के अंदर जो भी आएगा वो string में आएगा. Otherwise, it will give an error. Okay, Komal, it's fine, but float के अंदर you have to use input also. Okay, so now I am going to use float, parenthesis, after that input, again parenthesis, after that enter a number. After that I am going to write, this is my floating point number. So let's check our program. Let me comment this. Okay, so I'm going to use 4.5. So my output will be, this is my floating point number 4.5. Okay, similarly, guys, quickly write the syntax for the integer one. If I want an integer number. Okay, Jia gave it first. Very nice, Jia. Okay, most of you are giving the correct answers now. Nice. Okay, so I hope most of you understand this part, how to take the input from the user. So quickly write a small program to take one number from the user and then output is it's a square. So I hope आपको सबको पता है square क्या होता है. You have to multiply a same number with the same number only. अगर मुझे 3 का square निकालना है, so what will be the 3's square? Square of 3. Yes, 9. Similarly, अगर 9 का square करना है, so what will be the output? Okay, 81. So guys, you have to make a program here. Quickly write and let me know when you are done with this. You have to take the input from the user now. Don't have to assign the value. Okay. Okay, Mithali, you have to take the input from the user. And after that, you have to write a program to output the square of that number. If the agar user ने 2 डाला है, you have to print 4. अगर user ने phone number enter किया है, then you have to print 4 into 4, that is 16. Fine. So quickly do that. Okay, Vanshika, nice. Okay, Vanisha. Okay, Twinkle. Twinkle, check आपने A का square ही किया है. Okay. Fine.
ओके अशीन चेक आपने सिंगल स्टार लगाया है, इट विल जस्ट गिव द मल्टीप्लाई. You have to use double that asterisk. Dolly, same problem is with your code. You have to use double asterisk. Okay, guys, you are doing a mistake. No, no, no. Okay, sorry. Those who have written n into n, that is fine. जिन्होंने n डबल पावर सॉरी डबल एस्ट्रिक n लगे, दैट मीन्स कि आप उसका खुद का स्क्वायर कर लो. सपोज 4 का 4 की पावर 4 कर रहे हो आप लोग. ओके सो फिर Amin, just correct your code. Okay, you have also did the same mistake. अगर आपको ऐसे करके करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सो यू हैव टू राइट दिस as Twinkle did that. Yes, yes, Twinkle, it's fine. Okay, so most of you did it correct. So I'm also doing, let's say my variable is num. I want an integer variable input, enter a number. After that, what I have to print, let's suppose I'm taking another variable, and in that I'm going to print num into num, print square of num is sq. Okay. So this will be my code. So if I enter 4, my out should be 16. Similarly, if I press 8, my output should be 64. I hope this program is clear to all. Okay, Vanshita. Okay, Mithali, it's not clear to you, okay? Okay, Mansi. Aarti, Amanpreet, Anjali, Anshika, Archana, quickly type in the chat box if this program is clear to you. Okay. 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 Okay, Mithali, is it clear now or should I explain it once again? Just type in the chat box. Also, if you are able to unmute yourself, just let me know. Okay, Aarti, it's fine. Okay, Mithali. Okay, so before moving to the multiple inputs, here is a task for you all. You have to make a calculator. Okay, in that calculator, what you have to do, you have to input these operations. Okay, Kushi, can you please share your code in the chat box?
Okay, code is correct, Khushi. Let me also try. Okay, see, the output is 4 only. Just check it once again. Yes, Shyam, it is fine. खुशी तब भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. The code is same. Okay, Deepa, what do you want to ask? I am just unmuting you. Deepa, just try if you can unmute yourself. Hello, Dee. Hi, Deepa. दी उसमें इनपुट एंटर द नंबर के बाद मतलब हम उसमें क्या कैसे करें, फोन में ये हो नहीं पा रहा. Okay, so Deepa, मुझे ये बताओ कि अगर मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है तो what I'll do? मैं दी ये तो हो गया, लेकिन जैसे कि आपका है ना एंटर ए नंबर, तो यहाँ पर हमने जैसे कि एंटर किया कोई नंबर, तो उसे दोबारा से रन कैसे करना है ये नहीं हो पा रहा फोन में. Okay, again you have to run that thing. जैसे आप नॉर्मल रन करते हो ना, फिर से आपको रन करना पड़ेगा उसे. वापस बैक जाके जैसे आप नॉर्मल रन करते हो कोड को, अगेन यू हैव टू रन लाइक दैट ओनली. लेकिन ये तो हो नहीं रहा. Can you share the photo of your screen in the WhatsApp group and also tell me the WhatsApp group number? ग्रुप नंबर 2. Okay. एक बार फोटो शेयर कर दो. ओके दी. ओके, गुलडीन कौर जिसने ग्रुप पर शेयर की है, प्लीज चेक आपने कोई इंडेंटेशन, कोई स्पेस तो नहीं दिया ए के पहले. इट इज शोइंग दैट एरर. Yes, Anshika, your code is fine. Yes, Archana, just a second. Yes, Archana, you can unmute yourself now. मैम इट सिंपली हो रहा है मैम. अगर जहाँ पे शो कर रहा है एंटर नंबर व्हेन वी पुट अ नंबर एंड सिंपली एंटर इन अवर फोन, इट्स शोइंग. हाँ, इट विल शो. आपको एंटर ही करना है. सिस्टम पे भी वी हैव टू प्रेस एंटर. यस मैम. Okay, guys, so those who are doing it on phone, just please note you have to press enter. उसके बाद it will do, and उसके बाद again you have to run that code. Okay, Kanishka, can you share your code in chat box? Okay. Okay, others, you can just continue with this task. Those who are getting error, no issues, guys. Just try this task. You have to make a calculator, and calculator में क्या करना है आपको? यहाँ example देखो, the one that is highlighted part. Okay. आपको A और B दो numbers input करवाना है user से, and similarly you have to make a third variable, that is operation. Operation भी आपको enter करवाना है user से, ठीक है? And the operations are mentioned here. You have to do addition, subtraction, multiplication, division, float division, square of a number and cube of a number. Okay. So जब भी user जैसा number जैसा operation enter करते हैं वैसे ही आपको output दिखाना है. जैसे suppose यहाँ पे user ने enter के 5, A में, B में 6 enter किया, operation उसने डाल दिया addition. तो output क्या दिखाना चाहिए? The sum of 5 and 6 is 11. Similarly, अगर user ने डाले division, then it should show the division of 4 and 2 is 2.0.
Here it should not be sum. Okay. Whenever you are done with this code, just write done in the chat box. Also, you can, the hint is that you can use the if, else if, elif and else. Mitali, can you unmute yourself? Mitali, just check if you can unmute. Okay, Mitali, just tell me कि addition में you have to do a plus b, right? Okay, Mitali, you are not audible. Harshita Virdi, can you unmute yourself? Hello, Dee, am I audible? Yes, Harshita, you're audible. Okay, just remain unmuted only, okay? Hello? Yes, Harshita, just remain unmuted only, okay? Anji. Okay, so Harshita, what you have to do these operations in your code. Similarly, as you did in the above code, ना आपने कैसे किया था? Square निकाला था, right? But वहां पे आपने एक नंबर इनपुट करवाया था. अब यहाँ पे आपको क्या करना है? You have to take two inputs, A, B, for the number, and third one is for the operation. Operation में you have to enter these, any of these. ये user के ऊपर depend करेगा. अच्छा, ठीक है जी. ठीक है, उसके बाद आउटपुट आपको ऐसे दिखाना है. एंड द हिंट इज आप इफ, एल्स इफ और एल्स कंडीशन यूज कर सकते हो. ठीक है दी, ठीक है, समझ गए. ओके, दैट्स थैंक यू दी. नो प्रॉब्लम हर्षिता. ओके, अमीन, फॉर द फ्लोर डिवीजन आई टोल्ड यू यस्टरडे, अगर वो सपोज करो, अच्छा ठीक है, लेट्स डू हियर. Okay, guys, what should be the output of this? The blue highlighted line. Okay, Komal is saying 6. Okay, Havisha is saying 2. Okay, Vanisha 2. I mean, you can also try. Okay, Shyam 2. Okay, Vanshita. Okay, Preeti. Okay. So guys, the output will be 2. Okay, you can see the output here. So I mean, that's what you have to do. आपने A, B दो नंबर लिए ना, so A फ्लोर डिवीजन B ऐसे करके करना है. स्क्वायर एंड क्यूब के लिए you have to take one number. या तो आप A का कर लो या फिर सिर्फ B का कर लो. ओके अंशिका? Okay, Kanishka, you have to press enter. Okay. Okay guys, जिसका हो जाए so write down in the chat box. And जिसको कोई problem आ रही है, just raise your hand and I'll solve it. Okay, Shyam, I'm just unmuting you. Check, you can unmute yourself now. Hello, Dee. Okay, can you please tell your name? हर्षना, एक्चुअली मेरा भाई इससे मीटिंग करता है तो वही श्याम Yeah, सुंदर I कर know दिया. Zoom में वो रेन का नहीं हो पाता.
हाँ, मैं ये बोल रही थी स्क्वायर वाला मेरा आउटपुट सही नहीं आ रहा है। ओके, क्या मैंने प्रॉब्लम आ रही है बोल दिया उसमें? था आपको तो कह रहा है वैल्यू एरर कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग जी टू फ्लोट, ऐसे Okay, कुछ just a कर second. Okay, are you on laptop or phone? लैपटॉप। Can you share a screen? श्योर। Okay. ओके निश्चिता, आपने चेक करो क्या किए, आपने इनपुट नहीं दिया उसे, जस्ट एंटर एनी नंबर एंड उसके बाद एंटर डालो। यस, इट्स विजिबल। ओके, जस्ट मेक इट अ फुल स्क्रीन, वो भी हाफ हाफ स्क्रीन में आ रहा है। हाँ, ये होगा कैसे? ओके, जस्ट मैक्सिमाइज इट। नाउ इट्स फाइन, बेटर। ओके, आपने देखो नंबर कोई डाला नहीं है अभी तक उसमें। कहाँ? यहाँ पे तो मैंने ये वाला एक बार दोबारा से रन करो इस वाले को। न्यू टर्मिनल्स करके। नहीं नहीं, जहाँ पे if डॉट पाई वाली फाइल खुली हुई है ना, उसके ऊपर राइट क्लिक करो जाके। ओके, इट्स VS कोड। यस, रन कर दो, फिर ऊपर रन का ऑप्शन आता है ना, फिर जैसे आप रन करते हो वैसे कर दो, पाइथन if डॉट पाई लिख के। हाँ, जस्ट टाइप योर नेम। ओके, नाउ प्रेस एंटर। अब नंबर एक कोई भी डालो एंड उसके बाद एंटर प्रेस करो। अब कोई नंबर डालो फिर से, फिर प्रेस एंटर, देन चेक स्क्वायर आएगा उसका। फाइन, हाँ, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। स्टॉप कैसे? अच्छा, यहाँ से होता है। ओके वांशिका, यू कैन यूज STR। ओके, आपको इनपुट लेना है, सो इनपुट के लिए आप नॉर्मल इनपुट भी ले सकते हो, दैट्स नॉट नेसेसरी कि आपको STR लगाना है। जैसे नॉर्मल इनपुट लिया था ना अभी तक हम लोगों ने, सिमिलरली यू कैन डू लाइक दैट ओनली। इज देयर एनीवन जिसको एरर आ रहा है या कोई इशू है? यू कैन रेज योर हैंड, या जिससे कोड नहीं हो रहा दे कैन ऑल्सो रेज देयर हैंड। Okay, Oshin, you're fast. Okay, Amin, nice. Okay, 2 out of 101 have completed the code. Okay, Khushi, you have to do this code that is there in my screen. Example has been shown here. Okay, Isha. Okay, Nishtha. Okay, Jia. Okay, Ritika. Yes, Twinkle, you have to do all the operations. सबके लिए you have to make the conditions. ओके, जिसको भी इनपुट वाले में प्रॉब्लम आ रही है गाइस, आपको एंटर प्रेस करना है। ओके, इनपुट देके प्रेस एंटर। फोन पर हो तो फोन पे, अगर लैपटॉप पर हो तो लैपटॉप पर भी, यू हैव टू प्रेस एंटर। ओके रक्षा।
Okay, Khushi, I'm just making you unmute, okay? Okay, check if you can unmute yourself now. Hello. Yeah, Khushi, you're audible. Yeah, I didn't get it. What we have to do? Okay, खुशी आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लेने हैं. फर्स्ट इज ए, सेकंड इज बी, थर्ड इज ऑपरेशन. फाइन. Okay. फर्स्ट 2 आपको इंटीजर लेने हैं. जो थर्ड वन है वो आपको एक स्ट्रिंग लेनी है. एंड स्ट्रिंग जो होगी वो हमारे ऑपरेशन होगी. ऑपरेशन यहाँ पे जो लिखे हैं वो सारे, मतलब जैसे सपोज आपको एडिशन करवाना है तो आपने ऑपरेशन डाल दिया एडिशन. अगर किसी यूजर को मल्टीप्लिकेशन डालना है तो वो मल्टीप्लिकेशन डालेगा. फाइन. Yes. See. सारे एक साथ नहीं डालना है, एक एक करके डालना है. एंड उसके बाद आउटपुट उसी अकॉर्डिंग आना चाहिए. अगर यूजर ने एडिशन मांगे, द आउटपुट शुड बी द सम ऑफ 5 and 6 is 11. सिमिलरली अगर डिवीजन है, द डिवीजन ऑफ 5 and 6 is डैश. सिमिलरली अगर स्क्वायर या क्यूब है तो किसी एक नंबर का, द स्क्वायर ऑफ 5 is this. ठीक है. Yes. See. Got it. Thank you. Okay, no problem. Okay, Mansi. Okay, Harman. Okay, Zoya. Okay, Udita. Okay, so I guess most of you have completed. Is there anyone who is doing? Should I wait or should I continue? Okay, I'm just showing one of the operation, how to do it, so that those who are facing issue, they can continue. So guys, check, मैंने यहाँ पे 2 इनपुट के लिए दो इंटीजर वेरिएबल बनाए हैं, a and b, and I am taking the input from the user. Now I am making an OP named variable, and in that I will take a string. After that, अगर यूजर ने ऑपरेशन में डाला है
square. So my output will be, I'm using f string, b square of a is a into a. For now, I'm using any else. Okay, so let's check. 5, 4. Okay, Mithali, just check. Understood or not? Others also check. अगर आप लोगों ने ऐसे ही किया है तो. Okay, खुशी, मैंने पूरा कोड नहीं लिखा. I just wrote this part only. So, do you want me to share this one only? Also guys, make sure जैसे यहाँ पे input लिया है, similarly you have to show it in the output, okay? So assignment में just try to do same thing only. If I want A after that colon and then the input, similarly you have to do that, okay? Okay, so I guess most of you have completed. Let's come to the presentation again. Guys, just let me know in the chat box if my presentation part is visible to you. Okay, Kushi, if you do addition, then you have to print A plus B. No, Kushi, you have to do for the other parts. I told you, na, मैंने बाकी सारे नहीं किए हैं. Rest you have to do. After this multiple inputs, I'll check the code जिसने किया है calculator वाला, okay? So then you'll get an idea. Okay guys, so multiple inputs में हम क्या करते हैं यूजर से? अभी तक what we were doing, हम लोग सिर्फ एक सिंगल इनपुट ले रहे थे. Like अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए, I was just taking x की वैल्यू, that is 4 only. Let's suppose 4. ठीक है, अगर मुझे सिर्फ कोई एक स्ट्रिंग चाहिए, so I was using input, a simple string I was entering. But in the multiple inputs, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग दो वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं दो वैल्यूज. ठीक है, लेट्स सपोज अगर मुझे 2 और 3 एक ही साथ डलवाना है विदाउट प्रेसिंग एंटर, सपोज मैंने 2 स्पेस 3 दबाया एंड देन इफ आई प्रेस एंटर, मैं चाहती हूँ मेरा फंक्शन हो जाए जो भी मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ. सो व्हाट आई डू, द सिंटैक्स विल बी सेम, बट please make sure that you use two variables here, x comma y. If you are using a and b, two variables, then use a comma b. तो input लेना है, अंदर वही सेम चीज, एंटर दी 2 वैल्यूज या फिर कुछ भी यूजर के लिए मैसेज. उसके बाद यू हैव टू यूज द फंक्शन स्प्लिट. गाइस, स्प्लिट से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स. ओके, टू ब्रेक, ओके स्पेस, ओके अलग करना, ब्रेक, सेपरेट, डिवीजन. ओके, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट. Okay, so guys, split मतलब yes, खुशी, to show separately. Okay, so split का meaning कि हम लोग जो भी एंटर करेंगे उन दोनों चीज को स्प्लिट करना है, अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, ब्रेक करना है. ओके, सो लेट्स चेक दिस कोड. हम लोगों ने 2 नंबर लिए x, y. मैंने इनपुट करवा ली, मैंने यूजर को बोला एंटर 2 वैल्यूज. उसने मुझे एंटर कैसे किया? 2 स्पेस 3 एंड उसके बाद उसने एंटर प्रेस किया अपने कीबोर्ड पर. तो प्रिंट होके मेरे पास क्या आएगा? एंटर 1 नंबर, एंटर num 1,
the value of x will be 2. Similarly सेकेंड लाइन में मेरा क्या प्रिंट होके आएगा, enter num2 colon that is 3. उसके बाद अब इसने यहाँ पे क्या किया है, x, y को. गाइस क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स, x और y में क्या हो रहा है. अब इस चीज को हम लोग क्या बोलते थे. ओके जी हाँ, कन्वर्ट टू इंटीजर, करेक्ट. ओके, टाइप कास्टिंग, यस, परफेक्ट. ओके, इम्प्लिसिट कन्वर्जन. ओके, आई मीन प्लीज नोट, इम्प्लिसिट कन्वर्जन अपने आप होती है, हम एक्सप्लिसिटली नहीं करते. सो दिस इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. ओके, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. Okay. Okay, so most of you remember. So guys, this is type conversion. We are doing explicit type conversion here. हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग स्प्लिट फंक्शन यूज करते हैं वो हम किसके साथ करते हैं, स्ट्रिंग्स के साथ यूज करते हैं. आपने यहाँ पे भी देखा होगा, हमने इंट नहीं लिया, हमने इनपुट लिया है, हम दोनों को स्प्लिट करें. सो हमें जब भी स्ट्रिंग को अलग अलग इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है तो हम ऐसे करते हैं, क्योंकि अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, वो कंकैटिनेट होके हो जाएगी वैल्यूज. ये मैं प्रैक्टिकल से समझाती हूँ, देन यू गेट इट बेटर. ओके गाइस, सो साथ में लिखना सब. Let's suppose I have two variables a comma b. I am going to take input into two numbers dot. I am going to call the function split. Okay, guys, साथ में करना so that you don't face much issues. After this, I am going to print my two values. A is A, print B is B. After that, अब मैं यहाँ पे उसको टाइप कास्ट नहीं कर रही हूँ, जस्ट चेक मेरा आउटपुट क्या आएगा. ओके, कैन एनीवन टेल मेरा आउटपुट क्या आएगा. अगर मेरा इनपुट है 3 and my input here is 6, आउटपुट क्या आएगा मेरा इस वाले कोड को रन करके. ओके, हर्षिता वेरी करेक्ट. ओके, वंशिता यू आर आल्सो करेक्ट. ओके, 9. ओके, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग 9. ओके, गौरांश is saying 36. Others? Okay, Dolly is saying 9. Okay, 103. Okay, 36. Okay, 9. Okay, 36. Okay, Twinkle says 3 space 6. Tanisha 36. Okay, so we have a large number who are saying 36. So guys, let's check. First 3. Have I used A and B above also? Okay. Yes, sorry. Okay, so the output is 36. गाइस ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बताया था अगर हम लोग इसको टाइप कास्ट नहीं करेंगे सो ये स्ट्रिंग के तरह लेगा एंड इट विल प्रिंट 3 6 कंकैटिनेट करके. ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टाइप कास्ट इट. सो मैंने C को टाइप कास्ट किया इंट में, देन D को किया
and now the output will be okay, so मैं रन करती हूँ. Okay, so the output will be 9 now. Okay, अगर मैं यहाँ पे इसको टाइप कास्ट नहीं करती and let's suppose I take the input hello world. I hope it is clear from the string part now. Concatenate हो गया ये hello और world दोनों साथ में आ गए हैं. ठीक है. अब don't try to convert it into int वरना वो error देगा. Okay, Khushi, can you please paste your code in the chat box? ओके खुशी, आपने दोनों नंबर एक साथ एंटर किए थे. रक्षा, अगर इफ यू आर डूइंग इट ऑन योर लैपटॉप, सो कैन यू शेयर स्क्रीन वंस? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स. Can you okay, so most of you are getting. Okay, guys, now tell if my voice is still breaking or it's fine now. Okay. Okay, Raksha, can you share your code in the WhatsApp group and just tell me the WhatsApp number? Group number, I mean. Okay, Khushi, code is correct. You just have to check कि आपने दोनों numbers एक साथ enter किए हैं या नहीं. No, Barkha, that doesn't mean. Okay, I'll just share my screen once again if my voice is fine now. महक, जस्ट चेक आपने उसको टाइपकास्ट नहीं किया है. जस्ट टाइपकास्ट CND. Yes, Arjuna, it is fine. Barkha, the split command. Okay, I'll just tell you once again. I'm sharing my screen once again. Just let me know if my voice is breaking after sharing or is it fine now? It is fine. Okay. Okay, Raksha, no problem. Vanisha, just try and just let me know in the chat box कि क्या result आ रहा है. Okay. Okay, guys, so let's check the
meaning of split in a better way. So let's do one thing. Take a variable x and उसमें कोई भी एक line लिखो string that you wants to. Yes, Vanisha, it will show an error. So you have to use a split only, okay? So I'm writing this is my Python program. Okay, can anyone tell जो मैंने अभी कोड लिखा है उसका रिजल्ट क्या होगा आउटपुट? The one that I'm highlighting now. खुशी आपको टाइपकास्ट करना है. Tanisha, can you hear my voice? Yeah, I can hear. Can you please repeat what I just said? Okay, Preeti, just check this code. अगर मैंने उसको टाइपकास्ट नहीं किया तो क्या होगा? It will just concatenate. It will not add. वो 3, 6 दोनों साथ में दिखाएगा. It will not add your numbers. Okay, I hope my voice is fine now. So guys, मैं पूछ रही थी कि इसका आउटपुट क्या आएगा? You can just type anything in the chat box जो आपको लग रहा है. No, Mac, I'll just tell you by the end of the session, okay? Okay. Okay, so I'm just किसी ने run किया, so just copy paste the output in the chat box. Okay, Mansi run the code. Yes. Okay, Jia. Okay, Harshita. Okay, Vanisha. Okay, so now I'm running it. Okay, so just note the output for now, okay? I'm again doing something. See, मैंने अब कॉमा कहाँ पे लगाया है? एक तो माई के बाद लगे एंड दिस जो सेकंड वन है दैट इज आफ्टर प्रो. I have divided program with a comma. Okay, so now my output will be, just check the output. Okay. Okay, see. Okay guys, just let me know मेरी voice break हो रही है या is it fine now? Okay, Havisha, it's just a variable. Okay. Okay, so guys, मैं जल्दी से बता दे रही हूँ दोबारा ब्रेक होने से पहले. So जो स्प्लिट फंक्शन है वो क्या करता है, जैसे उसको ये वाला सिंबल मिलेगा जो भी मेरे स्ट्रिंग के अंदर है, सपोज उसको कॉमा मिला फॉर नाउ,
सो उसने क्या किया, जहां जहां पर कॉमा आया है उतने पार्ट को एक पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे ही उसको पाइथन प्रो के बाद कॉमा मिला, उसने उसको एक स्ट्रिंग बना दिया एंड बाकी ग्राम को डिवाइड कर दिया। फाइन। यहाँ पे उसको देखो एक भी कॉमा नहीं मिला था। ऑल्सो यहाँ पे अगर मैं कॉमा हटा के सिर्फ स्पेस दूंगी तो उसे स्पेस जहां जहां मिलेगा, तो अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे इन दी सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स? जस्ट लेट मी नो। सिर्फ स्पेस को काउंट करेगा तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स बनेंगे अब? Okay, Gia is saying 4. Okay, Oshin is saying 5. Okay, Twinkle is saying 5. Okay, Mansi is saying 5. Yes, guys, it is, this split function is only for this string, not for the integer. That's why we were typecasting here. Okay, Aditya is saying 4. So guys, यहाँ पे 5 बनेंगे क्योंकि this अलग हो जाएगा, is अलग हो जाएगा, my अलग होगा, python अलग होगा, program अलग होगा. So let's run and test. Okay, you can see this is a single element, is एक अलग element हो गया. Similarly, my Python program. Okay, now check my third code. ओके, सो अब कितने बनेंगे? चेक दी x2, इसमें कितने एलिमेंट्स बनेंगे? ओके, कोमल सेज 4. ओके, 4. खुशी is saying 3. Okay, Mitali is saying 6. Okay, 3. Okay, we have 3 options, 3, 4, 6. Okay, Khushi corrected herself. She is saying 4 now. Okay, we have majority for the 4. So let's check. Okay, before checking, let's see. See this, एक हो गया एक एलिमेंट, बिकॉज जहां पे हैश आएगा वो उसके पहले एंड उसके बाद की चीज को स्ट्रिंग में सेपरेट कर देगा. So this is one element. After hash is my P is second element. Python and PR is my third, and the last is O comma gram. So in total there were 4 elements. Okay, so the division was still 4. Guys, quickly type in the chat box if you understand this split function. And I hope you understand why we were doing the typecasting also in this question now. Yes, Nikita, I'm sorry for that. I guess it's raining in my place, so that's why the voice is breaking. Okay. Okay, Mitali, you just want to understand this one? मिताली में स्ट्रिंग तो कहीं नहीं लिखा. ओके, जस्ट टेल मी, ये वाला कोड समझना है या फिर ये वाला? ओके, यू आर सेइंग दिस स्प्लिट स्पेस. ओके, गॉट इट. ओके मिताली, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां पे वो स्पेस रीड करेगा सो वहां पे वो डिवीजन कर देगा. यहाँ पे क्या कर रहे थे, जैसे उसने कॉमा रीड किया वो वहां पे डिवाइड कर रहा था. यहाँ पे जैसे उसने हैश रीड किया तो वहां पे रीड कर रहा था. फाइन. सो इसने जैसे यहाँ पे स्पेस रीड किया तो स्पेस देखो कहाँ कहाँ पर है, दिस के बाद, इसके बाद, माय के बाद एंड पाइथन के बाद. फाइन.
सो उसने बाकी सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिए 5 पार्ट्स में. आई होप इट इज फाइन नाउ. Okay, let's check. ऐसे. Or should I remove this whole thing? Okay. Okay, see उसने error दिया है. It is an empty separator. So we can't do that. Hello world. Okay, खुशी, see हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, हमें स्प्लिट का यूज चेक करना था. सो इनिशियली आई वाज टेकिंग 3 and 6. अगर मैं 3 and 6 को टाइप कास्ट नहीं करती तो इसका आउटपुट आता 3 and 6 दोनों साथ में आते हैं. Instead of adding them, it will come 3, 6 together. Similarly, if I write hello world, so it will concatenate it. वो से ऐड नहीं करेगा. हेलो प्लस वर्ड वैसे भी ऐड नहीं हो सकते. फाइन. If I enter 3, 6, my output will be 3 and 6. It will not give me 9. So for the 9, we have to typecast it. Khushi, just tell me in the chat box if you understood this now. Okay. Havisha is saying जहाँ पे हैश है वहां पे कॉमा क्यों दिख रहा है. ओके हवीशा चेक, मैंने उसको वही रहने दिया है. स्ट्रिंग तो मेरी वही है ना, तो कॉमा तो दिखेगा ही. वो स्ट्रिंग में से सिर्फ हैश को कर रहा है सेपरेट. इट विल रिमूव द हैश पार्ट एंड जहां जहां पे जो स्ट्रिंग है वो उतने पार्ट को अलग कर देगा. फाइन. Okay, so giving you a task. Okay guys, so this is your task now. You have to write a program to enter your name, age, roll number and the number of subjects that you are studying right now. Okay, like in your subject, if you have 4 subjects, then you have to enter that. And after that you have to print I am. Let's suppose अगर मैंने अपने name में अनुष्का डाले, so I am Anushka. My roll number is 70. After that, in the next line, I have to print I study 4 number of subjects. Okay, and these name, age, roll number, and number of subjects should be in
should be user entered. Okay, so quickly do this task. Okay, before that, thank you, Baraka, for reminding. Guys, calculator wala code, who can share our screen and show me the output and the code? Okay, Preeti, just tell me आपने फिर कैसे किया है? If you have not used if and else. Okay, Twinkle pasted her code. Okay, Twinkle, आपको A and B भी user enter number लेने थे. Let me copy paste your code. Yeah, sure, Preeti, just tell me the group number. Okay. Yeah, sure, Isha, you can share a screen. Okay, Anshika, just check हमने float division गलत किया है. Float division का sign is different. See in the Isha's code, float division का sign. No, Mehak, you don't have to submit that code. I'll just tell you the assignments question after this, okay? Just do this calculator one, and after that, I've already given you one task for now. After that, I'll tell you what the question is. Okay, guys, check Isha's code. Isha, थोड़ा सा ऊपर करना. I'll explain. Okay, so guys, check here. हम लोगों ने क्या बोला था? हमें दो इनपुट चाहिए, two numbers A and B. After that, we have to take another input, that is OP. Okay, so ईशा ने क्या किया है? उसने operations को एक menu type बना लिया है. Like जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, you have a menu there. So similarly, we have here operations वाला menu. So in the first, if the user enters 1 in the input, so it will perform addition. Similarly, second है तो subtraction, third है तो multiplication, fourth है तो division. Similarly, we have till 7. Okay. So operation में अगर जैसे user ने 1 enter किया, so ईशा ने condition लगाई, if op equals to 1, अगर operation की value 1 हुई, so it will print sum of A and B is A plus B. Similarly, अगर operation की value 2 हुई, it will find the difference. अगर operation की value 3 है तो multiplication करेगा. Similarly, 4, A is divided by B. 5 के लिए guys please check float division का क्या होता है operator that we use. Okay. Similarly, for this 6, that is a square. So ईशा ने वहां पे एक और number ले लिया C. She is finding the square of, okay,
ओके, ईशा ने ये चेक किया कि अगर यूजर को ए का नंबर ए का स्क्वायर करवाना है या बी का। ओके, अगर ए का करवाना है तो 1 प्रेस करो तो ए का निकल जाएगा, अगर बी का निकालना है तो बी का स्क्वायर हो गया। अगर यूजर ने 1 और 2 के अलावा कुछ भी उस टाइम पे प्रेस किया तो इट विल कम इनवैलिड इनपुट। सिमिलरली फॉर द क्यूब ऑल्सो। Okay, Vanshita has pasted her code in the chat box. Okay, Vanshita, that code is also correct. Okay, correct code. Thank you, Isha. Okay, Mansi, your code is also correct. Okay, Anshika, just check the floor division, okay? Okay, Havisha ने अभी न्यू वाला टास्क का किया है, fine. Area, name, your roll number, age. Okay, Havisha, it's fine, but एक लाइन मैंने न्यू लाइन में बोली थी, but that's also fine. Okay, Mansi, your code is correct. Okay, Kushi, you can do this without the input, but it's better if you take the input. In future programs, you have to take the inputs. Okay, Preeti, I'm just checking your code now. Okay, Preeti, just tell me कि जो आपने ऑपरेशन वेरिएबल यूज किया उसमें तो you have taken the input as plus, so वो a plus b कैसे कर रहा है? कहीं ऊपर भी कुछ किया है? Preeti, you can unmute yourself now. Am I audible? Yes, Preeti, you're audible. Yes, Dee. Okay, so in the code I can see आपने a and b input करवाया, similarly operation भी आपने input करवाया है, but input में हमने उसको already addition दे दिया है, but you have to print operation. Okay. ठीक है, बट आपने क्या किया है, सी आपने उसको 11 पहले से वैल्यू एंटर ही करवा दी है, एंटर नहीं करवानी, यू हैव टू डू a plus b, राइट? ओके, सो जहां पे आपने इनपुट जो थर्ड लाइन लिखी है ना, ऑपरेशन इक्वल्स टू इनपुट, उसके स्ट्रिंग में यू हैव टू राइट ऑपरेशन कोलन, फिर जो यूजर जब एडिशन डालेगा देन इट हैज टू परफॉर्म a plus b. ओके, आई विल ट्राई. ओके, अभी आपने ईशा कोड देखा था नहीं, यू हैव टू डू सिमिलरली लाइक दैट ओनली. ओके. Okay. Okay, guys, most of you are doing it correctly. Okay, Vanshita, I'm just sharing my screen. Okay, so this was the code that you have to do. This one.
Okay, Harman, your code is also correct. Nikita, I'm just checking your code. Yes, Nikita, your code is also correct. Okay, Nishtha, your code is correct. Just make sure आपने braces लगाए हैं, and also you have to use F string. Code is correct. Okay. Okay, Jyoti. Okay, Jyoti, your code is correct. Khushi, code is correct. Just try to take the input from the user now. Okay. Code is correct. What's the error? Okay, just check. आपने roll number के बाद full stop लगाए. You have to remove that. Also space भी है roll number के बीच में. Check हम variables को कैसे define करते थे. You can't do that. Do like this. Okay, Komal, your code is correct. Just make sure जब आप roll number and number of subjects ले रहे हो, so it should be int. Okay. Okay, Raksha, same goes for you. जब भी age और roll number ले रहे हो, just make sure चलो roll number में have used the string also, that's fine. But in the age and number of subjects, just use integer. Okay. Yes, Kushi, it's look good. Yeah, सही लग रहा है मुझे. Check करना एक बार करके. No, Anjali. खुशी, can you share screen या फिर WhatsApp पे डालूं? Shrishti, are you there, or Tanisha? Yeah, I'm here. Okay, can you please repeat the rules that are for the declaring a identifier or a variable? Yeah, for declaring identifier, it should be first letter should be letter or start with an underscore. First character should not be a digit. Am I audible? Yes, Tanisha, you're audible. And defining an identifier, we should not use special characters. Identifier must not be a keyword. Okay, I guess one is left. That is, you can use the case sensitive. Yeah, case sensitive. Khushi, do one thing. Just remove the content that you have written in the starting. आपने line number 38 में थोड़ा space दिया है. I guess उसकी वजह से आ रही है, या फिर ऊपर कहीं पे space है. Just try to do it in a new file. Okay. Okay, Mitali.
Okay, Raksha, fine now. Yes, so I have written in the group too. You can do it tomorrow. Okay, guys, so I guess most of you are doing this correct. So now I'm just telling you what you have to do in the assignment. The first of all, listen this very carefully. The assignment form will be sent to you on the WhatsApp group at 9. Okay. Good Kirat, it will be sent to you in the WhatsApp, also in the chat box. Tunisha, please send the attendance form. Okay, so guys, listen it carefully. The assignment form that will be different from the feedback form will be floated on the WhatsApp group at 9 p.m. today, okay? And you have to submit it by tomorrow 9 p.m. And no issues will be entertained. Agar issue hai, just tell me right now or in the WhatsApp group, because we have given you an option this time. You can also do it on your phone or your laptop. Just feel comfortable. Okay, let me stop share. Okay, just tell me now, is it fine or still breaking? Okay, so guys, I was saying that the assignment form will be different from that of the feedback form. It will be shared at 9 p.m. today, and you have the time till tomorrow 9 p.m. That is one day. And tomorrow no class will be going live. So कल कोई class नहीं होगी. You just have to submit your assignment today. Okay, assignment form will be shared to you. And you have to do it by tomorrow 9 p.m. Twinkle Sunday को class होगी. Assignment form में एक question है. No Anjali, no class will be tomorrow. Okay, assignment form में एक question है. You have to do that question. So I am just telling you what is the question. उसमें you have to take 3 inputs from the user. जो भी आप input लोगे, that should be in upper case only. Upper case I guess सबको पता है, capital letters में लेना है. कोई भी नंबर, कोई भी letter आप ले रहे हो, you have to take upper case of that letter. Okay. जैसे आपने enter करवा लिया, उसके बाद you have to print. After change, I guess there is one line, print line. After that, you have to print all the alphabets or letters in the small letters. And you don't have to use the string function to lower it, okay? I told you already, dot upper and dot lower, you don't have to use that functions. Without using function, you have to do that question. Yes, Anjali, the question is given in the feedback, in the form, assignment form. And also there is one screenshot of the examples also. So you can check the example there. I am sharing my screen, but my voice is breaking. Just check. This is the question and this is the input and output that I want. Okay, so this is the question that you have to input 3 letters and it should be in upper case only. ठीक है, and मैंने जैसे बोला था मुझे input ऐसे ही चाहिए. After that, the output should come after conversion. These 3 lines should be printed with the lowercase letters. And at the last आपको क्या करना है, print करना है जो भी middle letter होगा. Like suppose ABC है, तो ABC में से middle letter कौन सा है? Quickly type in the chat box. Which one is the middle letter of ABC? Okay, most of you are correct. So guys, similarly you have to do in this question. आपको अलग-अलग inputs के लिए check करना है. If it is running fine, copy the view link as I already told you in the starting of the session.
मुझे कॉपी करके लिंक वो वाला पेस्ट कर देना फीडबैक सॉरी असाइनमेंट फॉर्म में एंड देन सबमिट इट दोज हु आर डूइंग इन गूगल कोलैब फाइन. For converting these uppercase to lowercase, you can take the help of ORD method that I already told you in one of the class. You don't have to use the string method. Again saying, okay. Those who are doing it from their Android phone. So what you have to do, you have to take the screenshot of your code and the output and upload that in the assignment form. Those who are doing on Google Colab, उन्हें ड्राइव लिंक से जाके व्यू लिंक शेयर करना है. Okay, also one thing more, कॉपी मत करना. I'll be checking each and every code, वेरिएबल नेम वगैरह सब चेक होगा. Okay, Nikita, just a second. Yes, Nikita. दी मुझे ये पूछना था. Yes, Havisha, this is for. Yes, Nikita, ask. दी मुझे ये पूछना था कि जो आपने असाइनमेंट का भी क्वेश्चन दिया है तो अगर हम लोग गूगल कोलैब में करते हैं तो उसका लिंक पेस्ट करते हैं और आपने क्लास के स्टार्टिंग में असाइनमेंट बोला था ना कि आपको मतलब गूगल फाइल देखनी है तो उसका सेकंड असाइनमेंट. Okay, your voice is breaking to me. मुझे जितना समझ आया है आपको सिर्फ इसका व्यू लिंक मुझे सबमिट करना है. सिर्फ यही एक ऑफिशियल असाइनमेंट है, इसके मार्क्स होंगे. सो यू हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट और कोई असाइनमेंट यू डोंट हैव टू सबमिट. ओके ओके महक, आई विल टेल यू द डाउट्स बट जितना हो ट्राई दैट कोड एंड डू इट. ओके, डोंट लीव इट कि आया नहीं, जस्ट ट्राई जैसे भी हो. Yes, Anjali, that's all from my side today. Those who don't have any doubts, you can leave. Okay, Gurleen, just a second. Yes, Gurleen. Actually, I am asking the middle letter is D. How can the middle letter is D? Okay, so Gurleen, check according to the alphabetical letter. हम लोग जब A B C D करते हैं, so E comes first, right? Yes. Then G, and after that it comes V. So the middle letter here is G. Okay, and we have to matlab write this na in output that middle letter is D. Yeah, this whole input from output, this should be same. मतलब मैंने colon लगाया, you have to write the colon only. Okay, thank you. Okay. Yes, Nikita, Harshita, you all can leave, those who don't have any doubts. Welcome, Gurleen. Thank you, guys. Yes, yes, Sakshi, we are going to share. Okay, Tanisha, Shrishti, I'm going to end the meeting now, okay? Okay. Okay.